Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute. As you can see on the screen students, today yes we are going to talk about 12th economics. Students who have been promoted or will definitely get promoted to 12th standard. So economics, in 12th economics, what is it that you have to study? What are the chapters you have to go across? How you have to deal it? What are the different aspects, its importance, scope, everything students, complete package I have brought for you. It is really going to be a very informative video students, and you will enjoy it because now your perception towards economic subject will definitely change. I hope so. You will start liking the subject because anything which you start liking, obviously it remains your favorite. So this is how the psychology works. But without delaying much children, let's get started. Today's topic which we are going to discuss is obviously all about 12th economics. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very, as I already told you, useful to everybody. Okay? So this is what your textbook looks like students. I hope some of you might have purchased also, and you have a PDF copy also available in Bal Bharati website. So what we will understand next is the important chapters which are there. Okay? So the chapters which you are going to study in this subject in 12th standard is, I'll just read out for you students. Introduction to micro and macroeconomics, and if you can little bit go in the flashback students, हमने micro और macro का थोड़ा सा meaning 11th में definitely पढ़ा था. ठीक है? So that will be one chapter. Utility analysis, very important chapter you will be having. Then you have demand analysis, elasticity of demand, supply analysis. Okay, in brief, if you want me to tell, I can tell you कि what is microeconomics, what is macro, इंडिविजुअल यूनिट्स कैसे स्टडी करते हैं और एज अ होल इकोनॉमी कैसे ये होता है माइक्रो और मैक्रो में. यूटिलिटी डिफाइंस अबाउट द वांट्स, द अनलिमिटेड वांट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, आपकी वांट्स इंक्रीज होती है, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं इस वजह से, एंड मोर. डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, different graphs you all will have, elasticity of demand, supply related details, forms of market, money market, capital market, index numbers होगा आपका, calculations होंगे, you have to calculate the problem in quartile, decile. You will understand students what am I talking, slowly and steadily. Okay, but yes, this is how it goes. देन नेशनल इनकम के बारे में होगा, हमारे कंट्री का इनकम, द टोटल इनकम, द नेशनल इनकम, हाउ इट गेट्स फॉर्म्यूलेटेड, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, हाउ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैज़ एन इम्पैक्ट. फिर पब्लिक फाइनेंस जो अवेलेबल है इंडिया में उसके रिलेटेड. देन आई वाज टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, या हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, एंड कम्स योर फॉरेन ट्रेड. तो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ये चैप्टर्स हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है, ये the daily things which happen in the country, in our state. If you watch this in the television and you all come across new words और आप बोलते हो ये क्या है, ये कुछ और नहीं, it is all related to this study students. तो अगर आप पहले से ही बेसिक से ही अगर आप एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखते हो सब्जेक्ट का, तो you will enjoy economics and you have lots of opportunities in economics also, that we will understand later. Right now I hope you all have understood the chapters of this particular subject. ठीक है? Next we have importance. Now students, what is the importance of this subject? हम बोलते हैं कि economics पढ़ना है, no, economics is this, economics is that. ऐसा कुछ नहीं है. Economics has its own importance students. See, right now you all are aware that Sri Lanka is facing crisis, economic crisis, you can say the worst crisis ever. तो इतने में आपको पता चलना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी का स्टैंड स्टिल होना या स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है, और हमको उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? सो यू शुड नो द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर इकोनॉमी. ओके, गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड और कंजम्पशन कितना हो रहा है, कैसे हम प्रोडक्शन करें. सडनली यू कम टू नो दैट द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो गया. क्यों इंक्रीज हो गया? व्हाई?
व्हाट इज़ द लॉजिक, कंट्री क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, क्यों एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, या वेजिटेबल्स द प्राइजेस समटाइम्स इंक्रीज लिटिल बिट डिक्रीज, तो सब कुछ क्या है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर डिमांड एंड सप्लाई, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोनॉमिक स्टूडेंट्स। हम लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हम लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लेते हैं, पे बैक करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, उनका लोन सिस्टम होता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। दिस इज वॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज। स्टूडेंट्स डोंट टेक इट ओनली एज अ सब्जेक्ट, इफ यू स्टडी इट प्रॉपरली, इफ यू, आई विल रादर से, इफ यू understand the subject, it becomes very easy for you and you can become a economic advisor also, ठीक है। सो कॉमर्स में हर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंस है स्टूडेंट्स। वी डोंट स्टडी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स इन द एग्जाम, वी डू स्टडी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स आई सेड क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, मतलब अंडरस्टैंडिंग। हर कोई नो अगर इवेल्युएशन के लिए ही पढ़ना है तो हर कोई पढ़ के टेस्ट दे के मार्क्स ले लेता है, बट अंडरस्टैंडिंग दैट्स व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हेल्प यू टू टेक और मेक द डिसीजंस, ठीक है। सो दिस आर फ्यू पॉइंट्स अंडर इम्पॉर्टेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वंस अगेन इंडियन इकोनॉमी, हाउ इट्स वर्किंग, कितने साल में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कंज्यूम होते हैं, डिमांड सप्लाई कैसे लिंक होता है, ओके, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एंड दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस एंटायर चैप्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कोप। सो ना व्हाट इज स्कोप, मतलब अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका स्कोप क्या है, क्या एडवांटेज है, व्हाट हाउ इट विल बेनिफिट अस। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको मार्केट नॉलेज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, जिसने इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझा है, द वन हु हैज़ अंडरस्टूड, एंड आई जस्ट गिव एन एग्जांपल व्हेन देयर वर in 1991 a very important step was taken by our previous prime minister Mr. Manmohan Singh regarding those crises. Then he went into like a privatization. Remember, if you all have studied previously, if you will have got some examples about how that economic crisis were overcome. तो आपको एक मार्केट नॉलेज आ जाती है कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन से हम बाहर आए। इफ़ यू कैन सी राइट नाउ बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर्स कमर्शियल, जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये सारे इंडिया में आकर बस रहे हैं। सो यू कैन सी हाउ वाइड द मार्केट इज। सो यू शुड अंडरस्टैंड द मार्केट नॉलेज वन, यू कैन बिकम इकोनॉमिक्स फॉर श्योर। यू कम टू नो अबाउट द different investments, money market, capital market, trading, you can come to know everything, how economy, production, हमारे टैक्सेस जो भी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, कैसे हम हमारा नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इट्स अ वाइड नॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत स्कोप है। यू कैन लेट यू कैन योर सेल्फ इन टू अ बिग करियर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सिंपल एडवाइज़र के तौर पर भी लोग अब बहुत सारा पैसा कमाते हैं, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, बट नॉलेज इज़ द किंग, knowledge is what we have to understand, and then the later things. But right now as a student you should know there is a huge scope for economics as well. So study it because you want to understand it rather for any other purpose, ठीक है। So this is a scope. Tips अगर मैं देना चाहूँ तो I would have given you lots of tips in the previous video also, which will be a little bit similar, but काइंडली राइट नोट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यू कैन नॉट रट्टोफाई, यू कैन नॉट डू रॉट लर्निंग। अगर आपने रट्टा मारा एन एग्जाम में लिखा एंड देन इवन दो यू गॉट मार्क्स, व्हाट इज़ द पॉइंट व्हेन यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। तो काइंडली अंडरस्टैंड एंड देन मेक योर ओन नोट्स, दैट्स व्हाट आई से। और if even we are trying to put the statements or notes which we are providing in commerce tutor solving it, we put all the notes in our own words also sometimes. Kindly check out, try to do mind mapping, try to relate students कि एक incident को एक topic को relate करो. I hope you all are made aware about what is mind mapping. It is understanding the concept based on the relation you're making, or remembering the dates based on the incident, or coloring sketch with the first initial of the word. So there are different ways you can remember. तो उस चीज़ से सीखो.
and most importantly you have to do a systematic learning. It's not like okay, I will study a day prior to exam. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. You have to start from the stretch, and this is the best time you all have got, students. You all can study, this 1 month of holiday if you have got, then I think this video will turn out to be a blessing in disguise, you can say. So you can just go for it, okay, but do it systematically. ठीक है? And more tips I would like to give you, which I have mentioned in common mistakes which one do. There I will discuss more, but these are the main things. Don't skip writing notes, so that's for sure. Then one more thing I would like to tell you, students, yes, you will be having calculations and drawing of graphs, charts, whatsoever. Demand and supply में आपको होगा ये. You have to solve lots of problems. टेक्स्ट बुक में जितने हैं उतने आप कर सकते हो, इलस्ट्रेशन के कर सकते हो, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कर सकते हो. इट्स मोर देन इनफ. But understand formulas, students. I hope those who are math students, they know how to remember the formulas logically. Here also you have some formulas, but very simple formulas, but you have to remember, put the formula and get the answer. These types of questions definitely you are going to score full marks. And one more thing, when you are writing economics paper, make sure that it is neat and clean and tidy, because your first impression of the paper, because if you are writing an economics paper, it should be very neat, students, because it gives a very good impact to the evaluators. And when anything which is very clean, people would definitely love to read it. Okay? So concentrate on calculations and graphs. Draw them very clearly, very nicely. Don't overwrite. ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं आपको. So that's why I'm telling you to practice. Written practice is the must. That's what I say. Then 100% marks के लिए क्या करें? Obviously students, last 5 years के, top 5 years के, you can say, papers, question papers को solve करो. टाइमर लगाओ. टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर डैम इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से. स्मार्ट नोट्स बनाओ. अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही स्मार्ट नोट्स बनाओ. टाइम टेबल शेड्यूल करो. विच एवर टाइम इज गुड फॉर यू, मॉर्निंग और early in the morning or late in the night, whatsoever. The timetable should be on your wall, where you get up and see the wall, because that's what will give you encouragement. And if you want 100% marks, students, you have to take little bit of efforts, because nothing is easy, isn't it? The best part of economics is, students, to understand the concept, do a group study अपने peer के साथ, अपने friends के साथ, instead of discussing about anything other things which are irrelevant. You can do a group study where you give one topic, different topics to each student or your friend, and then discuss or do debates on this. Debate is fabulous, students. If you do debates on any concepts, you will remember for a lifetime. Trust me, we have done this and we remember some concepts throughout our life. We will never forget them. So this is little bit of small hidden secrets how you can score full marks in economics. ठीक है? No one can dare deduct your marks if your concept clarity and examples are there. So group studies plays a very important role. Involve your teachers also in this, because the more people come into it, the more brains will start working and more new ideas, more new thinking will come out. ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जो हमें लगता है सही है बट वो सही नहीं है, स्टूडेंट्स, इट्स नॉट राइट. वन, डोंट स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट्स, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हु कम टू मी फॉर डाउट्स एंड ऑल, एंड देन दे शो मी द टेक्स्ट बुक. व्हाई से वेयर इज द नोटबुक? दे से नो मैम, आई स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. नहीं, बिल्कुल नहीं. इट्स अ बिग नो. Don't study from the textbook, because studying and looking at it and then highlighting it, no, a big no. Make a notebook. I told you, make smart notes, understandable notes. रट्टा मारना बंद करो. Stop rote learning, students, and do written test of what you have studied, because when you study, when you understand, how others will come to know that you have understood based on what you understand and write. To do written test. Prepare answer keys. Now this is something new which I would love to tell my children, that prepare answer keys. जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, sit for 3 hours, because 80 marks का पेपर 3 hours के लिए होता है, and attempt it sincerely without any disturbance, and then
come aside, don't open your answer, answer sheet, make one answer, keep in advance, and then cross check where you have gone wrong. This is a evaluator, self evaluator, you can say, students, and it will really help you a lot. Otherwise, the best thing is you give these test papers to your concerned teacher and let her or him evaluate, and they will give you the best response ever. Have some connection with the teacher and tell her that this is the test I'm attempting, kindly correct it. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी students, because if you have your goal to be achieved, then definitely you have to work towards it. ठीक है? And being in the 12th standard, I feel that this is just a stepping stone. Rest is history which will happen. So don't do these mistakes for every subject. But this is regarding economics. So I have taken economics topics and related to that I'm discussing. ठीक है? So these are some of the common mistakes. Now then comes very important, how to increase your general knowledge regarding economics. Because students, economics में हर दिन एक नया चीज़ या एक नया न्यूज़ या एक नया थिंग comes out in the economy. For that you have to read newspapers. I know today's generation, they have their apps, so you can go for news channels, news apps, but see that you read them. और एक newspaper manually पढ़ो, because the more you read, you know about the Economic Times you have. It's the best paper. वहाँ से आपको बहुत सारे examples मिलेंगे जो आप यहाँ पर लिख के अच्छे से marks ले सकते हो. ठीक है? News apps I have told you already. Daily Hunt हो गया, Times of India हो गया, you download them. They themselves will give you notification if something news, but please notify as per your likes, okay? Not general news or economic news, commerce related news, or general also भी चलेगा, but try to focus on economically related news. News channels are there. Don't see those who are shouting वाले channels, but little bit of economic वाले जो daily news जो बहुत अच्छे से देते, kindly put a habit of watching them. And trust me and take a word from me, students, check after 1 month. Today is 25th, I guess. Next 25th, you will be so confident. Before someone explains you or teaches you, I think you will be in the better position to understand and respond back. Okay? So these are few things which I researched for you. I felt that I should tell this to my dear children, because they are the people who are hunting for something, 12th standard details. And also I think 12th economics is a fabulous, economics is a fabulous subject. So wherever you study, whichever year you study. So that's it, children, in this video. I hope I have made most of the things very clear. जो भी बच्चा कुछ डाउट था वो भी clear हो चुका होगा. So relax, take a deep breath and study economics. It's very easy, very simple and easy to score. So that's it, children. Thank you so much. I hope you'll find the video useful. Soon I will bring some other subjects which will really help you out. Thank you so much.